Today's topic is Plato and Aristotle. Plato was the teacher of Aristotle, even though the foundational beliefs of both were the same. Aristotle disagreed with Plato's idealism. He had a practical and a more down to earth outlook, making him more empirical in his ideas. They were similar to each other because they both believed in rationality, virtue, and philosophy, that is, the pursuit of knowledge. Plato differed in his idea of truth. He believed that true reality exists in an ideal world beyond the physical world. On the other hand, Aristotle felt that the ideal world connects with the natural world. There is a direct experience of the physical world. Plato felt that reality was imperfect and therefore it was just an imperfect reflection of the ideal world. Plato used discussion as a mode of explaining his ideas, while Aristotle used logic and categorical syllogisms to explain what he understood as reality. Plato talked of ideal society, while Aristotle believed in a practical approach to social existence. To sum up, we can say that both were rational and ethical and believed in the fact that education alone can improve human society. प्लेटो और अरस्तु की समानता यह थी कि दोनों का मानना था कि बौद्धिक ज्ञान, सद्गुण और दर्शन अर्थात ज्ञान की प्राप्ति जीवन के उद्देश्य हैं। मनुष्य सामाजिक है और नैतिक विकास एक अच्छे राज्य और समाज के लिए ही होता है। प्लेटो मानते थे कि वास्तविक जगत आदर्श जगत की प्रतिलिपि है। प्लेटो आदर्श राज्य में भी विश्वास करते थे, जबकि अरस्तु व्यवहारवादी और भौतिकवादी दृष्टि रखने वाले थे। इसलिए वे मानते थे एक कि आदर्श जगत व्यवहार जगत में समाहित है, दो तर्कशास्त्र यथार्थ को समझने में सहायक है, तीन अरस्तु राजनीति और समाज को व्यवहारिक मानते थे और अरस्तु बौद्धिकवाद को यथार्थवाद के साथ जोड़कर देखते थे, जबकि प्लेटो पूर्णतया आदर्शवादी थे। आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः नए टॉपिक के साथ आपके पास पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।